लगातार बारिश की वजह से बेंगलुरु बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। साउथ बेंगलुरु में बहुत ज्यादा नुकसान देखा गया है। साउथ बेंगलुरु के बिस्मिल्ला नगर इलाके में घरों के अंदर पानी चला गया। रास्तों में पानी की वजह से पूरा ट्रैफिक जाम, और देख सकते हैं किस तरह से ये रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हो गए हैं और घरों के अंदर भी बहुत ज्यादा पानी अंदर आने की वजह से नुकसान हुआ है। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने बेंगलुरु के मुतासिर इलाकों का दौरा किया। उसमें खुसूसन बिस्मिल्ला नगर और आसपास के इलाके का भी दौरा किया। मुकामी लीडर और केएसआरटीसी के चेयरमैन रिजवान नवाब और साबिक एमएलए सोम्या रेड्डी की क़यादत में उन्होंने पूरी तरह से इस इलाके का जायजा लिया और मुतासरीन से मुलाकात की और आने वाले दिनों में इन्हें कंपनसेशन देने और दीगर सहूलियात फराहम करने का यकीन भी दिलाया। रिजवान नवाब और सोम्या रेड्डी की जानिब से इलाके के मुतासरीन को राशन किट तकसीम किया गया और बुनियादी सहूलत फराहम करने का यकीन दिलाया गया। He has organized for funds from the CM's disaster management fund. We have requested the Honorable CM through Mr. Ramling Reddy that the stormwater drain should be addressed immediately. So she has given her the proposal on her letterhead. CM in principle has agreed to see that compensation is made to the affected people. First. Second, additional grants will be given through her to the commissioner to see that the work is implemented. Okay. On her letter, on her request, all these things are being done. So, on face value, please don't spread anything. You take the actual findings on the road. You talk to the residents. These are all residents. Yeah. We have not bought any hired crowd here. Highest compensation पूछ के है। कॉर्पोरेशन के हिसाब से 3,000 रुपए देते हैं, हम लाख से ज्यादा बढ़कर मांगते हैं। We have demanded the actual payments of the fridge, TVs, micro ovens, laptops of all the residents. कितने घर के लिए, कितने फैमिलीज? About 500 houses. उसका रिपोर्ट बन के है, ऑलरेडी रिपोर्ट भी बन के है। आपको होना, आपको होना इधर देखिए सोम्या रेड्डी के लेटर पर इनको मैंने देखो, उसके साथ साथ आपको ये मालूम होना विथ प्रूफ देके हैं सोम्या रेड्डी। ऐसा नहीं है कि बोगस दे रहे करके नहीं, with phone numbers of the actual residents. Video of the You show it to them. We are doing it authenticatedly. She's been going to each and every house. All of us have been seeing that in the past couple of days. There's been massive, highest rainfall, and in our Jayanagar Gurappan Pandya ward, it was also massively affected. Me and the former corporator, Rizwan sir and Manjunath sir, Ramlinger Reddy sir, all of us in fact came, and immediately we, in the middle of the night itself, we immediately told the engineers to stormwater drain, everybody to rectify it. So, but unfortunately the stormwater drain broke and water got into almost 500 houses. So everything, right from the furniture, everything was affected. So we in fact requested the Honorable Chief Minister Siddaramaiah sir, in fact George sir and Bhairathi Suresh sir, also ministers also came. We showed them the entire place, the houses. They also spoke to a few citizens as well, and so they said that yes, in fact it has already been rectified and the engineers are already at work. In fact the Chief Commissioner was also here, and we also requested that compensation should be given because these are all very, very, very poor families, dense area. So they have lost most of the belongings. In fact, right from breakfast to lunch to everything is being given. So yes, the CM agreed for that, and we are very, very thankful for the Congress Karnataka state government for this.